many CEO are from India. यस हाँ डेफिनेटली गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और IBM है, काफी जगहों के हैं, बहुत सारे जो हैं बहुत फेमस आ चुके हैं। वहाँ पर है ना जो है वो उनके CEO जो है वो है इंडिया से है। मैंने काफी ज्यादा सुना भी है, ठीक है, हमने इवन देखा भी ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शंस भी काफी सुने भी हैं कि कितने फेमस ऑलरेडी CEOs है जो इंडिया के हैं। एंड सीरियस जाहिर है क्यों नहीं प्राउड होगा, सबको प्राउड होगा यार कि अपना इंडिया का नहीं बाहर है ना फेमस CEOs हैं सारे। सो अब ये उस पर कुछ वीडियोस है जो हम लोग अभी जिस पे रिएक्शन देंगे, तो अभी स्टार्ट करके यहाँ पे लिखा है व्हाई सो मेनी। तो जो व्हाई वर्ड है वो हम वीडियो से पता करेंगे व्हाई क्यों लिखा। सो लेट्स सी। Google, Adobe, Microsoft, and IBM are all run by people who grew up in India. The latest to join these ranks is Twitter CEO Parag Agrawal, who took over from Jack Dorsey. People originally from India make up 1% of the total US population, yet about 6% of Silicon Valley's workforce. So why are there so many tech CEOs who hail from India? When Satya Nadella took over as CEO of Microsoft in 2014, the company was in bad shape. Bill Gates was reportedly an angry and difficult boss. His successor, Steve Ballmer, apparently wasn't any better. Microsoft was also a dinosaur. It had failed to innovate. For example, it lost the smartphone battle to Apple. Along comes Nadella, an engineer who rose through the ranks of Microsoft to become the CEO. Nadella changed the culture of the company. He made it clear anger and yelling weren't welcome. He also sought to make Microsoft relevant. We now need to make Microsoft thrive in a mobile-first and a cloud-first world. Under his direction, Microsoft moved its software to non-Windows devices and expanded its cloud business, Azure. That innovative spirit of problem-solving was bred in his native country. India is home to nearly 1.4 billion people. It's the second most populous country on Earth after China, and is expected to overtake China as the most populous country in a few years. Although India has made remarkable progress, poverty is still a major challenge. Nearly a quarter of the population lives below the poverty line of $1.90 a day, according to the United Nations Development Program. They face corruption, poor infrastructure, and limited opportunities, so they learn to be resilient, adapt, and overcome endless obstacles. This leads them to be problem solvers, a key asset in any corporation. Sundar Pichai has had to solve many problems after taking over at the helm of Google in 2015, at a time when big tech is being scrutinized over the power they hold. He became the archetype of a kinder, calmer, gentler leader in tech. Pichai earned an engineering degree at one of the Indian Institutes of Technology. The IITs are kind of like the Indian equivalent of MIT, with an even lower acceptance rate, reportedly of 1 or 2%. After Pichai graduated, his ticket to America came in the form of a master's at Stanford. Going to a top grad school in the States is how many Indians land up in the land of opportunity. They appear to follow this well-trodden path. They did their undergrad at a great school in India, got a master's in the US, where they studied STEM, science, technology, engineering, and mathematics. More than half of all international students in America pursued a STEM degree in the past academic year. American immigration favors people with specialized skills. After Pichai graduated, he went on an H-1B visa to work at consulting firm McKinsey. The H-1B allows American companies to employ foreign workers, many of whom are in IT-related fields. The U.S. government awarded nearly 75% of these visas to Indians in 2020. In comparison, China trailed far behind in second, at 12%. The fact that so many Indians can speak English is a tremendous advantage in the West, and they're comfortable with American business culture, possibly because it mirrors the thriving IT industry back home in Bangalore, Chennai, and Hyderabad. They're also more likely to want to work overseas. 80% of Chinese international students return to China after graduating, according to China's Ministry of Education. Chinese entrepreneurs prefer starting their own companies at home. Alibaba is known as the Amazon of China. Tencent owns the messaging app WeChat, used by 1.2 billion people. Huawei is one of the giants of the tech industry. China's transition from a manufacturing hub to a tech hotbed has largely been driven by government policy. In the late 70s, Chinese leader Deng Xiaoping encouraged foreign businesses to set up offices in China, which fostered a startup environment. On the other hand, India has a problem of too much talent leaving the country for good. It has the highest number of migrants living abroad, at 17.5 million, according to the UN.
and more Indians gave up their passports to become naturalized American citizens in 2020 than the Chinese, continuing the trend from past years. However, the brain drain from India may be starting to recede. An increasing number of homegrown Indian startups are becoming unicorns, meaning the companies are valued at $1 billion or more. The data platform Traction tells Newsthink India created 47 unicorns in 2021, a significant jump from the 17 in 2020, and even less in years past. 21. The tech ecosystem is being bolstered by powerful investment firms such as SoftBank that have been pumping money into Indian startups. But in order to entice more people to remain in their native country, salaries will have to catch up with those in the West. The average American tech worker earns around $98,000 a year, according to the online recruiting platform Dice. Tech salaries in India vary greatly, but the job site Indeed pegs the median salary at $20,000 US, going up to as much as $33,000, which makes them some of the top earners in their country, but still, far less than what they make in the States. As salaries grow along with India's startup boom, this could have implications for the number of exceptional individuals desiring to move abroad. The one thing that the CEOs of tech giants have in common is their strong background in engineering. If you wanted to improve your STEM skills, my sponsor Brilliant can help you achieve your goals. Brilliant is a website and app that lets you tackle math, science, and computer science concepts in a fun and hands-on way. You can develop your critical thinking skills through their recently updated logic course that forms the basis for mathematical reasoning. Or you can jump right into their popular mathematical fundamentals course to master algebra, logic, and number theory. There's something for everyone, whether it's the fact. Okay, so यहाँ stop कर देते हैं. काफ़ी अच्छा बताया गया इनके बैकग्राउंड के बारे में और जो पूरा इंडिया के बारे में और कंपेयर किया कि चाइना में ऐसा है क्योंकि वो सेकंड पर आता है हमेशा, ठीक है. तो पूरा काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि भाई हाँ यहाँ पर इस तरह से पॉपुलेशन के बारे में है कि टैलेंट के बारे में है कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी इंग्लिश आती है, ठीक है. और इन सबको काफ़ी अच्छा माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है, हर चीज़ इनको लर्न करवाई जा रही है क्योंकि आगे चलने में इनको ईजी हो, ठीक है, किस तरह से आगे चलना है. बिकॉज हम सब जानते हैं कि चाइना एक ऐसा है कि हाँ यार उनके पास टैलेंट है, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, हर चीज़ इनकी जो होती है वो इन्वेंट करते हैं, हर चीज़ न्यू चलते हैं. पर अब है ना इंडिया भी पीछे नहीं रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये लोग खुद सिखाए जा रहे हैं कि भाई ये है. इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यही रीज़न है कि आगे चल के उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो अभी तक ये ना इनको बनाया जाता है सी जो वाई जिसमें आ रहा था उनको सबसे वाई क्यों कहा गया, वो इन्हीं वजह से क्योंकि इनके पास टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है. हाँ एग्जैक्टली क्योंकि वैसे भी है ना, नो डाउट अभी इंडिया भी ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आगे है. और वहाँ पे वैसे भी आईटी फॉर्म सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं और वहाँ पे तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रेश लोगों को भी, वहाँ सपोर्ट इतना सारा अच्छा मिलता है लोगों को. एंड है ना जैसे इसमें बता भी रहे थे कि कितना कंफर्टेबल भी हो रहे थे बाहर यूएस लोगों के साथ भी काम करके, उनके साथ वर्क करके. तो ये एक छोटा सा सिनेरियो ऐसे ही का वीडियो शॉर्ट हमारे लिए दिखाया गया था, बट बहुत अच्छी थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी हमारे लिए, लाइक हमने भी इंजॉय किया. वैसे तो इसमें काफ़ी लाइक नोन पर्सन थे जो हम पहले से हमें पता था कि एप्लीकेशंस है ना ये सारे सीईओज इंडियाज़ के ही हैं, बट एक वीडियो बताने का लाइक बैकग्राउंड बताया जिस तरह से उन्होंने काम किया वगैरह सब काफ़ी चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हाँ यार अच्छी तरह से उन्होंने काम किया. और जिस तरह से बताया गूगल और जो नहीं फेसबुक वगैरह उन सब से कनेक्ट होकर काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत बट डिटेल्स में नहीं बताया, ठीक है. बट ये है जो वाई वाला था ना उसे बता दे कि हाँ यार इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया. बट क्यों मैम बस ये बताया, बट बहुत अच्छा बताया जिस तरीके से इन लोगों ने डिस्क्राइब करके. ओवरऑल बाकी हम सबको पहले से ही पता है कि अब हर चीज़ में ना इंडिया भी बहुत आगे है, बहुत देनी अच्छा मीन्स हर चीज़ में ना आ रहे हैं वो लोग, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, सॉफ्टवेयर आईटी से रिलेटेड हो, मल्टी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्वमेंट है. वहाँ तो टैलेंट लाइक बहुत ही बड़े हैं, हम वैसे भी रिएक्शन देखते मतलब रहते वहाँ हैं. पर चलो हाई क्लास वाले एक अलग है बिकॉज हाँ उनको बताया गया फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हाँ यार भाई लोग हैं अमीर है ये वो. पर मैंने बहुत देखा है डिस्कवरी में या कहीं पर भी वहाँ पर अगर कोई मार्केट वाला हो या सब्जी वाला हो वो लोग भी काफ़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं काफ़ी डिस्कवरी और ये सब देखना पसंद करती हूँ. तो वहाँ कभी ऐसा होता है ना तो वहाँ पर मालूम पड़ता है कि हाँ वो खुद बोलना चाह रहे, इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं. तो ये चीज़ मैंने देखी हूँ कि जैसे अमेरिकन आते हैं और उनसे बात करना तो वो इंग्लिश ऊपर डिस्क्राइब करते हैं. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है. वगैरह आते होंगे हाँ तो उनसे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं. काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग. हाँ मैं भूल गई क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है. अच्छा मैं बहुत टाइम पहले देखती थी कि वो डिस्कवरी वगैरह चैनल, तो अब तो
निकल ही गया दिमाग से वैसे भी। मैं यहाँ पर मेंशन किया तो मुझे क्लिक हुआ, हाँ यार वहाँ पर मतलब ऐसा है कि एनवायरनमेंट काफी चेंज हो गया, काफी चेंज हो गया हुआ है। अब वो वैसा पुराना इंडिया नहीं रहा, वो बिल्कुल हाँ। नया बन गया हुआ है। तो आई थिंक विच इज वेरी गुड यार, अच्छी बात है यार, हर जगह हर किसी को आगे बढ़ने अभी का बहुत है। फास्टली ग्रो कर रहा है वैसे भी सब, जितना तेजी से है ना साल निकलते जा रहा है ना उतना तेजी से चीजें आगे बढ़ती जा रही है। Exactly. और नो डाउट हमने एक दो बहुत पहले एक पुरानी वीडियो दी थी जिस पे रिएक्शन किया था, स्टार्टअप वहाँ पे लोग इतने सारे बना रहे हैं, लाइक बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। स्टार्टिंग में है ना हर चीज़ वैसे भी अप्स एंड डाउन होते हैं, बट ये कि वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप उनकी बन रही, लोग अपनी अपनी कंपनीज बना रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा उस पर जा रहे हैं। हम यहाँ पर एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा गाइस। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।